Salutations, dear kids. How are you all? And a very warm welcome to your geography class with your teacher, Rajita. And here we are going to start class 7 geography, chapter number 5. That is circulation of water. क्या है ये circulation of water? Let's read about it. You will learn. आप क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? क्या पढ़ेंगे? Water cycle. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, एकदम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है ये वाटर, उसके बारे में पढ़ेंगे. सलाइन वाटर, ओशन सर्कुलेशन, वेव्स, टाइड्स, ओशन करंट्स. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. वाटर इज प्रेशियस टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर बहुत इंपॉर्टेंट. So it is very necessary for all of us to know its importance. The availability of potable water is very little. अब हमें इसके इम्पोर्टेंस, अब जब ये ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, तो हमें इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये जो पोर्टेबल वाटर है, जो पीने वाला पानी है, ये बहुत कम है. इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है. About 71% of the surface of the earth is covered with water. We have already read this earlier. Also, you have read this कि हमारा जो अर्थ है वो कितने परसेंट वाटर से कवर्ड है? 71% जो है उसका क्या है? अर्थ पे वाटर. This makes our earth unique as water supports the presence of life forms. इसलिए हमारा ये जो अर्थ है ये बहुत यूनिक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वाटर का प्रेजेंस है, वाटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे लाइफ भी है. The earth is often referred to as a watery planet. अब इस अर्थ को क्या क्या कहा जाता है? इसे watery planet भी कहा जाता है और blue planet, right? On account of this widespread presence of water. क्योंकि यहाँ इतना पानी अवेलेबल है, वाटर है, इसलिए इसे watery planet या blue planet भी कहा जाता है. All the water bodies such as oceans, seas, rivers, lakes, etc. together make up the hydrosphere. अब ये सारे water bodies जो हैं, lake, rivers, oceans, seas, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? Hydrosphere form करते हैं. Hydro means water. It also includes the ice sheets in the polar and the high mountain regions, underground water and water vapor. और क्या क्या चीजें हैं इसमें? जो पोलर रीजन्स में आइस शीट्स बनती हैं और जो हाई माउंटेन रीजन्स और अंडरग्राउंड वाटर में जो वाटर वेपर है और जो वाटर वेपर अवेलेबल है एयर में, जो वाटर वेपर है, इन सब से हमारा ये हाइड्रोस्फीयर बना. नाउ द वाटर साइकिल. व्हाट इज दिस? द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द अर्थ सर्कुलेट्स विद इन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर इन वेरियस फॉर्म्स. अब जितना भी वाटर प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, वो अर्थ पे ही सर्कुलेट करता है, अलग अलग तरीके से अर्थ सरफेस पे सर्कुलेट करता है और एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस पे अलग अलग तरीके से घूमता है. The water from the oceans and other water bodies evaporates due to the sun's heat and goes into the atmosphere as water vapor. You must have earlier also read about the water cycle. आप लोगों को पता होगा वाटर साइकिल के बारे में. क्या होता है? ये जो ओशंस हैं या जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जब इनका पानी सन की हीट से वार्म अप होता है, गर्म हो जाता है, तो क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर में भाप बन के उड़ता है, वाटर वेपर बन के. This water vapor, upon reaching the upper layer of air, cools down and condenses to form clouds. अब यही भाप जब ऊपर उठता है और जब एयर की अपर लेयर में पहुंचता है, वहां पे ये कूल डाउन, ठंडा हो जाता है और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं जिससे कि क्लाउड बनते हैं. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट इन द प्रीवियस चैप्टर. एज आई टोल्ड यू कि प्रीवियस चैप्टर में भी हमने ये वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था. क्लाउड्स कॉज प्रेसिपिटेशन and the water ultimately comes back to the earth as rainfall or snowfall. अब क्लाउड से प्रेसिपिटेशन होता है और फिर ये क्या करते हैं? जब ये बहुत हेवी हो जाते हैं, क्लाउड्स में वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये नीचे कैसे आते हैं? एज रेनफॉल एंड और स्नो.
Some water collects in rivers which ultimately drains into seas. और कुछ पानी, वो जो रेन जब होती है, जब बारिश होती है, तो उसका कुछ पानी रिवर में कलेक्ट हो जाता है और कुछ ड्रेन आउट हो जाता है सी में, समुद्र. Some collects in lakes and directly accumulates in oceans. और कुछ लेक्स में कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, और कहाँ एक्यूमुलेट होता है, डायरेक्टली कहाँ जाता है, ओशन. These are again exposed to evaporation and the cycle continues. Again फिर हीट अप होता है वाटर, फिर ये भाप बन के उठता है. इस तरह से ये वाटर साइकिल चलता है. This continuous circulation of water in various forms within the hydrosphere and atmosphere by the process of evaporation, condensation and precipitation is termed as hydrological cycle or water cycle. अब यही जो circulation है water का, किस किस फॉर्म में, evaporation, then condensation, precipitation, जो घूमता रहता है साइकिल, इसी साइकिल में ये वाटर, इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल. Now look here children, here you will be able to see that what happens here, the water is there, then the evaporation happens. Okay, भाप बन के उड़ा, evaporation हुआ, then clouds बन गए, condensation, then the precipitation happens and the rainfall is there. Again the water comes down, कुछ water नीचे चला जाता है underground, then some go in the infiltration underground water, कुछ rivers में चला गया, कुछ sea में, oceans में, and again it warms up और फिर से ये cycle ऐसे ही चलता है. So this is the water cycle. Now the distribution of water. Although about 2/3 of the Earth's surface is covered with water, very little of it is fresh. हालांकि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो उसका 2/3 जो है, 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम. About 97.3% of Earth's water is in oceans and seas. अब जो 97.3% अर्थ का जो वाटर है, कहाँ है वो, ओशंस में है या सीज में, समुद्र में. This is saline water and is not suitable for human consumption. अब ये कैसा पानी है, saline. Saline means नमकीन पानी. Okay, the salt, it is the salty water, और जो कि हम डायरेक्टली नहीं पी सकते. The remaining 2.7% is fresh water. अब जो बचा हुआ 2.7% है वो है fresh water. Out of this, 2% of water is in the form of ice caps and glaciers. अब इसमें से भी 2% जो water है वो ice caps, जो ice जमा होता है या snow होता है, ये glaciers में जो form, जो glaciers form होते हैं, उस form में water होता है, which are not accessible. अब glaciers को तो हम नहीं पी सकते हैं ना, पिघला के नहीं पी सकते हैं. Thus, only 0.7% of the Earth's water is easily available and fit for human use. तो अब बचा कितना, 0.7% वाटर जो है वो easily available होता है और हमारे यूज के लिए बिल्कुल फिट होता है. It is found as surface water in rivers and lakes. अब ये किस फॉर्म में, देखिए surface water के फॉर्म में rivers और lakes में पाया जाता है, as ground water and as water vapor in the atmosphere. सरफेस वाटर, रिवर्स में जो सरफेस वाटर है, रिवर्स और लेक्स में, या ग्राउंड वाटर है, या जो एटमॉस्फेयर में भाप है, वही इजीली एक्सेसिबल होता है, वो केवल 0.7% है. Saline water. What is saline water? Water in the oceans and seas contain a huge amount of dissolved salt. अब जो सी में या ओशन में जो वाटर है उसमें डिसॉल्व, घुला हुआ नमक कितना है, बहुत ज्यादा होता है. Normally every 1000 gram of ocean water contains about 35 grams of dissolved salts. Now see children, 1000 gram of ocean water जो है उसमें कितना नमक है, 35 grams dissolved salt. Fine. So the average salinity of the ocean water is 35 parts per thousand. हर per thousand में 35 parts जो है वो dissolved salt.
salinity of ocean water is however not the same at all places. हर जगह पे इसकी salinity बराबर उतनी ही नहीं होती है, अलग अलग होती है. It depends on the following factors. अब अलग अलग हर जगह पे salinity बराबर क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ चीजें, कुछ factors हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितना सलाइन है ओशन वाटर कहाँ पे. रेट ऑफ इवेपोरेशन, वहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है. अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश कितनी होती है. अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज एडेड टू द ओशन. फ्रेश वाटर जो है कितना ओशन में एड ऑन होता है. द डेड सी लाइंग बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल हैव अ salinity higher than 240 parts per thousand. As salinity water is denser, as saline water is denser than ordinary water. The saline water होता है, नमक वाला जो पानी होता है, नमकीन पानी, वो ज्यादा डेंस होता है ऑर्डिनरी पानी से. It is easier for swimmers to float in the Dead Sea. अब डेड सी में फ्लोट करना उनके लिए इजी होता है, ओके, स्विमर्स के. Now ocean circulation. Unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. अब ponds और lakes में तो जो पानी जमा होता है वो बहुत शांत होता है, मूव नहीं करता. बट जो ओशन का वाटर है वो क्या होता है, मूव ऑन करता रहता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, कभी स्टिल नहीं होता. द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अदर इज टर्म्ड एज ओशन सर्कुलेशन. अब यही मूवमेंट जो है ओशन वाटर का, एक पार्ट, ओशन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो भी मूवमेंट होता रहता है उसे कहा जाता है ओशन सर्कुलेशन. इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड ऑन बॉर्डर स्केल एज ओशन करंट्स. और ये किस फॉर्म में हमें दिखता है, वेव्स के फॉर्म में या टाइड्स के फॉर्म में या बॉर्डर स्केल पे ओशन करंट्स. द मेन फैक्टर्स दैट कॉज मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर. अभी जो ओशन वाटर मूव करता है इसके फैक्टर्स के, the temperature difference and the density variation in sea water. Sea water में जो temperature का difference होता है या उसके जो density का variation होता है उस कारण से होता है. The variation in salinity of water in the oceans, the effects of prevailing winds. These are the factors. Now let's read about the waves. When wind blows over the ocean's surface, it creates waves. अब जब ओशन के सरफेस पे ऊपर विंड ब्लो करती है, हवा चलती है, तो वो क्या कॉज करता है, वो वेव्स फॉर्म करता है. Their size depends on how far, how fast and how long the wind blows. अब उनका जो साइज है, जो लहरें हैं, वेव्स का मतलब लहरें, उनका जो साइज है, कभी छोटी लहर आती है, कभी बड़ी लहर आती है, उससे भी बड़ी लहर आती है, वो डिपेंड किस पे करता है कि वो जो हवा है, वो जो विंड है, वो कितनी तेज और कितनी दूर तक है. Particles of water are pushed down by the wind and they come up again. अब ये जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये हवा से पुश डाउन, हवा इसको पुश डाउन करती है, नीचे धकेलती है और फिर ऊपर लाती है. This up and down movement is passed from one particle to other and is visible as a wave. अब ये जो अप डाउन मूवमेंट है, ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे जाता है, इसलिए वो हमें वेव की फॉर्म में दिखता है. एक पार्टिकल नीचे, उसका नीचे थ्रस्ट नीचे आया, नीचे गया, वो फिर से ऊपर आया, एंड अगेन द विंड के प्रेशर से फिर से वो नीचे गया, तो इस तरह से ये वेव्स फॉर्म होती है. हाईएस्ट पॉइंट द वेव्स रीच इज कॉल्ड द क्रेस्ट. अब जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है जो वेव, उसका हाईएस्ट जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट. द लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रफ. लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं, ट्रॉप बोलते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू द नेक्स्ट इज द वेवलेंथ. अब एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक जो जाता है उसे क्या कहा जाता है, वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट इज द वेवलेंथ. We call it wavelength. The number of waves that pass a given point in 1 second is the wave's frequency. Fine, children? Now this is the structure of wave. Okay? The height of the waves depends on the speed of the wind.
अब वेव्स की जो हाइट है, कितनी ऊंची है एक लहर, वो डिपेंड करता है विंड की स्पीड। A brief, gentle breeze forms patches of tiny ripples on the water surface called catspaws. Okay? जब बहुत जेंटल हवा चलती है, बहुत हल्की सी हवा चलती है, तो आपने देखा होगा पानी के ऊपर जब हल्की हल्की हवा आती है तो वो हल्की हल्की सी हिलती सी नजर आती है, रिपल्स ऑफ वाटर, और उसको क्या कहते हैं? कैट्सपॉज। Strong and violent winds create huge waves which often cause widespread destruction. लेकिन जो बहुत तेज हवा आती है, वायलेंट बिल्कुल हवा चलती है, वो क्या कॉज करती है? ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं उससे, और उससे बहुत बार बहुत तरह के डैमेजेस, डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं। Giant waves that sometimes hit the coast are called the tsunamis. और जो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, आके कोस्ट पे हिट करती हैं, उनसे बहुत बार सुनामी भी फॉर्म होता है। Such waves are caused by earthquakes, landslides and volcanic eruption. और ये जो giant waves बनती है, बहुत बड़ी वाली जो huge waves बनती हैं, वो किस कारण से होती है? earthquake, landslide या volcanic eruption. As these waves approach coast, they build up in height and crash onto the shore, causing enormous destructions. और ये वेव्स, जब ये ऊंची ऊंची वेव्स कोस्ट की तरफ को हिट करती हैं, तो वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं और क्रैश करती हैं शोर पे, जिस कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। So this was about the waves. Now here's a case study, children. Tsunami in the Indian Ocean in 2004. जो 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। On the morning of 26 December 2004, a massive undersea earthquake occurred off the western coast of northern Sumatra, Indonesia. Up on one morning of 26 December 2004 में क्या हुआ? एक massive, बहुत बड़ा earthquake, undersea earthquake आया, जिस कारण western coast of northern Sumatra, Indonesia. Its magnitude was 9.1 on the Richter scale. उसका जो magnitude था उस earthquake का 9.1. The earthquake caused a series of tsunamis that devastated the coast of most land masses bordering the Indian Ocean. अब उस earthquake के कारण series of tsunamis आए, बहुत सारी tsunamis आई, और उन्होंने क्या नुकसान कहाँ किया? कोस्ट ऑफ मोस्ट लैंड मासेस, जो कि बॉर्डर करते थे कहाँ? इंडियन ओशन के बॉर्डर पे। अफेक्टेड एरियाज कौन से थे? द रीजन्स वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया, साउथ इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। यहाँ ये रीजन बहुत ज्यादा इफेक्टेड। Some places in these regions were hit by the waves almost 30 meters high. कुछ जगहों पे तो जो वेव्स ने हिट किया, जो लहरें आई थी, वो कितनी ऊंची थी? 30 meters हाई थी, 30 meters ऊंची। Fine children, the countries along the east coast of Africa, about 4,500 kilometers west of the place of origin of earthquake, were also affected. Coastal areas of other South Asian countries like Malaysia, Myanmar, Bangladesh and Maldives also suffered serious damage. ये सब जगह है जहाँ जहाँ नुकसान हुआ। In India, अब इंडिया में क्या कहाँ हुआ था? The coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands were the worst effect. सबसे ज़्यादा effect इन जगहों पे हुआ था इंडिया। The Indira Point in the Nicobar Islands, which is the southernmost point of India, was completely submerged, as were a few other islands. जो इंदिरा पॉइंट है निकोबार आइलैंड्स में, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, वो कंप्लीटली डूब गया था। ओके, सी द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुनामी। नाउ ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था earthquake? The earthquake took place due to slipping of a long fault along the zone where the Indian plates dives under the Burma plate. इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट जो है, आपको पता है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है, मूव करती है जब। द बर्मा प्लेट रोड वर्टिकली अबव द इंडियन प्लेट। अब जो बर्मा प्लेट थी वो वर्टिकली
वर्टिकली क्या हुआ, वो इंडियन प्लेट के ऊपर आया. शॉक वेव्स वर रिलीज्ड एज रिजल्ट इन द इंडियन ओशन. और इस बर्मा प्लेट के इंडियन प्लेट के ऊपर आने से क्या हुआ, शॉक वेव्स आए इंडियन ओशन में. They traveled at a tremendous speed of 800 km per hour, creating tsunami. और इसने tsunami को develop. The waves were only a meter high in the deep sea, but reached a maximum height of about 30 meters as it approached the coast. ये deep sea में तो इसके जो waves थे वो बहुत कम थे, इसकी height बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही वो coast की तरफ आए उसका height 30 meters उस wave. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? The tsunami caused a great loss to life and property. More than 2 lakh people were missing and millions were left homeless. The waves traveled up to a distance of 3 kilometers inland from the coast, inundating farmland and wiping out villages. सब खत्म हो गए, villages पूरे villages खत्म हो गए, पूरे farmlands खत्म हो गए. Houses were flattened, trees and electric poles were uprooted. ये सब चीज जड़ से उखड़ गई सब चीजें. Vehicles were submerged. सारे vehicles पानी में डूब गए. A large number of deaths and destructions were a result of lack of any warning system. अब इतना जो नुकसान हुआ वो किस लिए हुआ? क्योंकि एडवांस में कोई भी वार्निंग सिस्टम नहीं था. कोई वार्निंग नहीं आई पहले से कि ऐसा हो सकता है. Tsunamis are rare in the Indian oceans. बहुत रेयरली आते हैं इंडियन ओशन में सुनामी. So, a tsunami warning system had not been developed for this region. Most of the victims were therefore caught unprepared. अब क्योंकि इंडियन ओशन में सुनामी बहुत रेयरली आता है, जल्दी नहीं आता वहाँ सुनामी, तो इसीलिए कोई वार्निंग सिस्टम भी नहीं था, कोई तैयार भी नहीं था इसके. वार्निंग साइंस. वार्निंग साइंस क्या होती है? There are certain signs that have been associated with a tsunami. One possible sign of tsunami is the withdrawal of the sea from the coast suddenly. एक जो साइन है सुनामी आने का वो ये है कि जो सी होता है वो कोस्ट तक आता है ना, बिल्कुल कोस्ट तक आता है उसका पानी, सी का समुद्र का. अचानक से अगर वो पानी दूर हट जाए कोस्ट से, तो this is a sign of tsunami. This takes place because of displacement of plates during an earthquake. Large quantities of gas may bubble to the water surface and make the sea look as if it is boiling. Bubbles आने शुरू हो जाते हैं. Sometimes the water in the waves may be unusually hot. कभी-कभी वो जो water होते हैं waves के वो hot भी गर्म भी हो जाते हैं. The water may even smell of rotten eggs or of petrol or oil, and the water may sting the skin. अब ये सब signs हैं सुनामी आने से पहले. Other early warnings came from animals who sensed danger and displayed strange behaviors or fled to higher grounds. अब सबसे पहले एनिमल्स को पता चलता है कोई भी ऐसा अगर कुछ होने वाला होता है, वो वार्निंग जो है वो एनिमल्स को सबसे पहले पता आ जाती है. Now the relief operations and aid came from around the world. और जो हेल्प आई वो ऑल ओवर वर्ल्ड से आई. हेल्प यूनाइटेड नेशंस, NGOs and social organizations joined the governments in relief and rescue operations. Though rehabilitation work in the affected areas is now almost totally complete, people are yet to come to terms with the emotional scar left behind by the killer tsunami. वहाँ rehabilitation दोबारा से सब कुछ बसा दिया गया है, सब कुछ ठीक कर दिया गया है, but the people are still afraid of this killer tsunami. Fine, children? Now let's read. This was a case study of the tsunami. Now we'll read about the tides. Tides are the periodic rise and fall of the water level in the sea, which occur at regular intervals twice a day. अब ये tides क्या होती है? ये एक periodic उठना और गिरना water level का sea में, जो कि क्या होता है? regular intervals पे होता है, दिन में 2. Tides are caused by the gravitational pull of the moon and the sun on the earth. अभी tides कैसे बनती हैं? ये gravitational pull of moon, चांद का gravitational pull और sun का gravitational pull on the earth. When the level of sea water rises and water moves further up the shore,
It is high tide. जब सी का जो लेवल है, लेवल ऑफ सी वाटर, वो बढ़ जाता है and the water moves further up the shore, और शोर की तरफ मूव करता है पानी, तब होता है high tide. When the level of water falls, जब water का level नीचे आ जाता है and the water recedes from the shore, और shore से हट जाता है पानी थोड़ा दूर, it is a low tide. A place usually has high and low tides twice in a day. एक जगह पे high और low tides दिन में 2 बार. Even though the moon is smaller than the sun, जो हमारा moon है वो sun से छोटा है, it exerts a much larger gravitational pull. लेकिन moon का जो gravitational pull है वो sun के gravitational pull से बहुत ज़्यादा है. This is because its distance from the earth is less compared to that of sun. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि moon का जो distance है earth से वो कम है, sun का distance ज़्यादा है. The height of the tides is not the same on every day of the month. पूरे month के हर दिन जो tides हैं उनका height जो है वो same नहीं है. The relative position of the moon and the sun with respect to the earth is responsible for the variation in the height of the tides. There are two extreme positions. अब two extreme positions कौन से हैं? Spring tide and neap tide. These two are the extreme positions, spring tide and neap tide. Now, what is a spring tide? On the full moon and the new moon, the sun, the moon and the earth are almost in the same line. जब full moon होता है, उस टाइम पे क्या होता है? जो sun है और moon, the sun, the moon और earth, ये तीनों चीजें same line, almost एक ही line में होती हैं. The moon and the sun exert their combined gravitational pull in the same direction. अब एक ही लाइन में होने के कारण जो moon है और sun है वो same combined gravitational pull होता है उनका एक ही direction, resulting in extra high tides. इससे क्या होता है? result करता है ये extra high tide. These are known as spring tides और इसे बोलते हैं spring tides. Now the neap tide. On the half moon, जब half moon होता है तब the sun and the moon make a right angle to the earth's center. अब जो sun और moon है वो एक right angle बनाती है earth के center, एक right angle. Fine. The gravitational pull of the sun and the moon tend to cancel each other. This results in very small rise and fall in sea water and is known as the neap tide. अब इसमें क्या होता है? जब ये right angle बनाते हैं earth center पे, तो वो इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के, ठीक है, नल हो जाता है वो, एंड इस कारण से क्या होता है? बहुत लिटिल राइज, बहुत थोड़ा सा राइज होता है सी वाटर, इसे कहते हैं नीप टाइड. डिड यू नो व्हाट द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड आर एट द बे ऑफ फंडी इन नोवा स्कॉटिया, कनाडा. नोवा स्कॉटिया कनाडा में बे ऑफ फंडी है, वहां पे क्या होता है? वहां हाईएस्ट टाइड फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में हाईएस्ट टाइड जो है इस जगह पे. सिंस द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, यू ऑल नो मून क्या करता है? मूव करता है अर्थ के चारों तरफ. इट इज नॉट ऑलवेज इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम ईच डे. सो ईच डे द टाइम ऑफ टाइम्स फॉर हाई, द times for high and low tides change by 50 minutes. Okay? हर दिन जो हाई और लो टाइड का टाइम है वो 50 मिनट से बदल जाता है. हाउ टाइड्स आर यूजफुल. अब ये टाइड्स जो है वो यूजफुल कैसे, क्या यूज है? टाइड्स आर हेल्पफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज. टाइड्स आर हेल्पफुल इन फिशिंग, ट्रेडिंग एंड नेविगेशन. फिशिंग में हेल्प करता है, ट्रेडिंग में हेल्प करता है और नेविगेट करने में हेल्प करता है. एट द टाइम ऑफ लो टाइड द मूवमेंट ऑफ वाटर इज टुवर्ड्स द ओपन सी. जब लो टाइड होता है तो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है? ओपन सी की तरफ. दिस हेल्प्स द फिशरमैन टू मूव अवे फ्रॉम द कोस्ट फॉर फिशिंग इन द ओपन सी. फाइन. ये फिशरमैन को बहुत हेल्प करता है. दे कैन कम बैक टू द कोस्ट विद द हाई टाइड्स. जब हाई टाइड्स होती है वो उसके साथ कोस्ट की तरफ वापस आती है when the movement of water is towards the coast. The surge of water up
the mouths of rivers during high tides also help the movement of large ships in and out of river ports. The ports of Kandla in Gujarat and Diamond Harbour in West Bengal are dependent on the tidal conditions. और ये जो ports हैं गुजरात कांडला गुजरात में और डायमंड हार्बर वेस्ट बंगाल में, ये किस पे डिपेंडेंट है? टाइडल कंडीशन पे, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स. Tides also help in clearing the silt and other sediments deposited by rivers on their beds and prevent the silting of the harbor. हार्बर में बहुत ज्यादा सिल्ट नहीं जमता है. किसके कारण? टाइड्स के कारण. The energy of the tides can be used for generating electricity. अब इसकी जो एनर्जी जनरेट होती है, जो टाइड्स जब बनती हैं, हाई टाइड्स, तो उस एनर्जी को क्या किसमें यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में. टाइडल पावर स्टेशंस हैव बीन सेट अप इन कनाडा, जापान एंड फ्रांस. और इसके लिए टाइडल पावर स्टेशंस भी सेटअप किए गए हैं कनाडा, जापान एंड फ्रांस में. Did you know the Gulf Stream is one of the strongest currents known, without which England and Europe would be as cold as Canada. जो Gulf Stream है, ये one of the strongest currents है. कहाँ पे? इंग्लैंड. Now the ocean currents. And ocean currents is continuous directed movement of ocean water. Ocean currents, अभी हमने पढ़ा कि oceanic currents क्या होते हैं? वो continuous directed movements of ocean water होता है. Ocean currents are rivers of hot or cold water within the ocean. The currents are generated from the forces acting upon the water, like the planet's rotation, the wind, the temperature, salinity differences, and the gravitation of the moon. The depth contours, the shoreline, and other currents influence the current's direction and strength. Now, the ocean currents are divided into two types. अब ये ocean currents जो हैं, ये कितने types में divided है? Two types हैं. The warm ocean currents and cold ocean currents. The warm ocean currents develop in the equatorial regions. ये कहाँ develop होती हैं warm ocean currents? Equatorial regions. They move towards the cooler polar regions. और वो कहाँ move करती हैं? Equatorial region में develop होती हैं और move करती हैं towards cooler polar regions. The cold ocean currents originate in the polar regions. अब जो cold ocean currents है वो polar region में originate होती हैं and flows towards the warm equatorial region. Opposite, okay? Polar में generate हुई, वो originate हुई और कहाँ flow किया उसने? Warm equatorial region. These currents also follow Ferrel's law and move in a clockwise direction in the northern hemisphere and an anti-clockwise direction in the southern hemisphere. अब Ferrel's law के according ये currents जो हैं, ये clockwise direction में northern hemisphere में move करती हैं and anti-clockwise direction में southern hemisphere. Okay? The ocean currents move swiftly with the speed of movement of water varying from 3 to 10 kilometers per hour. ये जो ओशन करंट से बहुत तेजी से मूव करते हैं, किस स्पीड से? 3 to 10 kilometers per hour. Ocean currents of a low velocity are called drifts. जो कम velocity के ocean currents होते हैं, उन्हें कहते हैं drifts. The velocity is reduced as a result of surface friction with winds. Now, the influence of the ocean currents. Ocean currents का क्या influence? Ocean currents help in determining the climates of the continents, especially those regions bordering on the ocean. अब जो ocean currents हैं, ये determine क्या climate of the continent के जो climates है, उसको determine करने में help करते हैं. For example, the North Atlantic Drift keeps the northwest European coast warm. अब जो North Atlantic Drift है, वो Northwest European coast को गर्म रखता है, while the California current keeps the Californian desert quite cool. और जो California current है, वो Californian desert जो है, रेगिस्तान जो है, उसको ठंडा रखता है. Ocean currents also influence rainfall. अब ये rainfall को भी influence करते हैं. कैसे? Winds passing over warm currents pick up moisture and cause heavy rainfall. अब जो winds
वार्म करंट्स के ऊपर से पास करती हैं वो बहुत सारा मॉइस्चर ले लेती हैं उसमें से, जिस कारण बहुत रेनफॉल होती है। ईस्टर्न यूएसए एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप रिसीव हेवी रेनफॉल। द कोल्ड करंट्स ऑन द अदर हैंड, अब जो कोल्ड करंट्स ये क्या करते हैं, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्राई कंडीशंस एंड दस are responsible for the creation of deserts. Now, this cold currents, what do? They help in the ये dry conditions develop करने में help करते हैं, मदद करता है और responsible होता है deserts form करने, create करने में. The Atacama Desert in South America and the Namib Desert in Africa are examples of such deserts. The places where warm and cold currents meet are rich in tiny organisms known as plankton that serve as food for fish. Now, वो जगह जहाँ warm और cold currents मिलते हैं, वहाँ क्या होता है, are rich in, वहाँ पे tiny organisms ज़्यादा होते हैं जिन्हें की कहा जाता है plankton, और ये क्या होते हैं, ये fishes के food हैं. Such places are good fishing grounds. इन जगहों पे बहुत fishes available हैं. Some of the richest fishing areas of the world are near the Newfoundland coast, where the Gulf Stream and the Labrador Current meet, and near Japan, where Kuroshio meets the Oyoshi. And Japan में Kuroshio Oyoshio से meet करते हैं. The meeting of warm and cold ocean currents result in thick fogs. अब जब ये warm ocean currents मिलते हैं, warm और cold ocean currents मिलते हैं, तो इससे thick fog, जो कोहरा होता है, वो develop होता है. These areas become dangerous for ships. अब जब thick fog हो जाएगा तो वहाँ ships के लिए dangerous हो जाएगा. The meeting of the warm Gulf Stream and cold Labrador Current of Newfoundland on the eastern coast of Canada produce extreme foggy weather. It is so deadly that it is called graveyard of 1,000 ships. अब यहाँ इतना deadly होता है, ये fog इतना dense होता है कि इसे कहा जाता है graveyard of 1,000 ships. It is very dangerous for these ships. Ocean currents help maritime trade as ships that follow through ocean currents move faster and save fuel. अब ये जो ocean currents है, ये ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो शिप्स फॉलो करती हैं इन ओशन करंट्स को, वो ज़्यादा तेज चलती हैं और इससे फ्यूल भी बचता है. ओशन करंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिस्पर्सल ऑफ मेनी लाइफ फॉर्म्स. अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल इज द लाइफ साइकिल ऑफ द eel. Fine, children? Now, here's the glossary. Some word meanings. Read the word meanings here. Now, a quick review of what we read in this chapter. Water is constantly in motion. The chief process responsible for moving water around Earth is hydrological cycle. जो अभी हमने इस लेसन में पढ़ा, एक रिव्यू लेते हैं इसका. The ocean surface can vary in temperature from a warm 30 degrees Celsius in the tropics to a very cold -2 degrees Celsius near the poles. The movement of ocean water can be broadly classified. Ocean water का जो movement है उसको तीन तरह से कैसे classify किया गया है? As waves, tides and currents. A tsunami is an extremely large wave in the sea caused by an underwater earthquake or a volcanic eruption. The rise and fall in sea level is called a tide. जो sea level का rise और fall होता है, इसे कहा जाता है tide. It is caused by a giant wave. An ocean current is caused by a number of factors such as planetary winds, difference in temperature and density of seawater, rotation of Earth, etc. Okay, children. So now, children, let's answer these questions. Darken the circle of correct option in OMR sheet. Which is not a movement of water in big water bodies? बड़े water bodies में कौन सा movement नहीं है water? Drift, mistral, wave, tide. Mistral. The upper part of a wave is called, wave का जो सबसे ऊपर का part होता है उसे क्या कहते हैं? Crest, trough,
summit, peak. It is known as crest. Which is the main cause for the occurrence of tides? Tides का main cause क्या है occurring? Wave movement, planetary winds, gravitational pull, inclination of axis. It is the gravitational pull. Fine. The forces of the moon and sun act in the same line, giving rise to spring tides every. ये spring tides कब होते हैं? जब moon और sun एक ही line में आ जाता है, moon, sun, earth. Full moon day, autumn season, full moon and new moon day, half moon day. It is the full moon and new moon day. Okay. About dash of earth is covered with water. 61%, 81%, 71%, 51%. About 71% of earth is covered with water. Now, fill in the blanks. The dash in the Andaman, okay, these are some of the words given here. Trough, salinity, Indra Point, drifts, crest, tsunami. So, now let's fill the correct words here. The dash in the Andaman and Nicobar Islands got submerged after the tsunami. The Indira Point. So, write down Indira Point. Okay, children? The measure of the content of salt is called salinity. It is called salinity. Now, the highest point of the waves reach is called the dash and the lowest point is called dash. The highest point is known as crest. It is known as crest and the lowest point is known as trough. T-R-O-U-G-H, trough. Giant waves that sometimes hit the coast are called tsunami. They are known as tsunami. And the last one is ocean currents of a low velocity are called drifts. D-R-I-F-T-S. Drifts. Okay, children? Now let's move further. Now, children, say if the given statement is true, T, or false, F. A tsunami is a strong tidal wave. No, this is false. Tsunami is caused by the moving of the tectonic plates. Condensation is essential for precipitation. Now, children, say if the given statement is true, T, or false, F. A tsunami is a strong tidal wave. No, this is false. A tsunami is not a strong tidal. It is not caused by the strong tidal waves. It is caused by the earthquake, by the moving of tectonic plates. So, the next is condensation is essential for precipitation. Yes, this is true. First the condensation happens and after that the precipitation. The rise and fall in the sea level is called tide. Yes, this is true. Neap tides are specially strong tides. No, this is false. Tides help in clearing siltation from harbors. Yes, this is true. Now answer the following questions. Why are the oceans salty? Oceans are salty because of the dissolved minerals and salts carried by rivers and streams from the land as well as from the underground volcanic activity. Now describe the working of hydrological cycle. अभी आपने hydrological cycle जिसे कि water cycle भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ा along with that picture there. So children, what you have to do, you have to go through the chapter again. उसको पढ़िए दोबारा से, hydrological cycle को अच्छे से read कीजिएगा and then write about it. How do ocean currents regulate global climate? The ocean currents regulate the global climate by redistributing heat around the earth. Now what happens? The warm ocean currents, they carry heat from the equator towards the pole, and the low ocean currents, they carry the cold water from the cold wave from the poles towards the equator. How are tides useful for us?
Just now we have read about the tides and how they are useful to us. So just read it and then write it. Describe distribution of water on the earth. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वाटर का अर्थ पे कैसे कैसे यूज होता है वो वाटर, वो सब हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा. सो इट्स योर वर्क नाउ टू रीड द चैप्टर अगेन. अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर को फिर से and then write down the distribution of water here. Okay? So children, stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new chapter, something more knowledgeable, more interesting to read. Till then, be happy, stay blessed. Bye.